व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 इन विच फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। सो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन. सो एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट अस जस्ट नोट डाउन ऑल द डेटा गिवन. ओके, सो फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल्स टू 7, then difference d is equals to 13 minus 7, that is 6, and this is the last term. तो ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, दैट इज़ ए एन इज इक्वल्स टू 205. क्लियर? ओके, लेट जस्ट स्टार्ट विथ द nth जनरल फॉर्मूला, दैट इज़ ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. therefore 205 is equals to 7 plus n minus 1 into 6. therefore 205 is equals to 7 plus 6 and minus 6. So therefore 205 is equals to 7 minus 6, that is 1 plus 6 and therefore 205 minus 1 is equals to 6 and therefore 204 is equals to 6 and therefore 204 divided by 6. 204 divided by 6 is equals to n. therefore n is equals to 34. क्लियर? सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं? 34. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, विच इज़ 18, 15 and half, 13 minus 47. okay, so first let's just denote all the data given. so n is equals to question mark, a is equals to 18. now we have to convert this mixed fraction into normal fraction. okay, so this is difference d is equals to a2 minus a1, which is 31 divided by 2 minus 18. so we have to take the LCM. so this is 31 minus 2 is the LCM, so we have to multiply this with 1 and this with 2. so 18 2s are 36, so 18 2s are 36 divided by 2. so the value that the difference is minus 5 by 2. okay, let's just start with the nth general formula, that is a n is equals to a plus n minus 1 into d. okay, so the last term is minus 47 is equals to a, that is 18 plus n minus 1 into minus 5 by 2. clear? therefore minus 47 minus 18 is equals to minus 5 by 2 and minus 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 plus 5 by 2. clear? so this is minus 65, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे minus 5 by 2, which is equals to minus 5 by 2 n. okay, so here also we have to take the LCM. so this is 2 and this is with 1, so therefore this is minus 130 minus 5 divided by 2 is equals to minus 5 by 2 n. okay, therefore this is minus 135 divided by 2 is equals to minus 5 by 2 n. 2 gets cancelled, minus minus gets cancelled. okay, so therefore we have 135 divided by 5 is equals to n. therefore the value of n is equals to 27. clear? so यहाँ पे number of terms जो है वो कितने हैं? 27. okay, now further move on to question number 6. okay, so check whether minus 150 is a term of this given AP. okay, so what we have to do here, आपको यहाँ पे ये बताना है कि -50 इस पर्टिकुलर सीरीज़ का कोई एक टर्म है कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे हम उसको, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो में आ जाता है तो वो एक टर्म बन जाएगा. ओके, अगर वो नहीं आता है, इफ़ वी हैव एनी रेशनल नंबर, तो यहाँ पे वो उसका टर्म नहीं आएगा. क्लियर? सो हियर ए एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -150 एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज़ 8 minus 11, दैट इज़ -3. क्लियर? सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द जनरल फॉर्मूला. a n इज इक्वल्स टू a प्लस n minus 1 इंटू d. therefore -150 is equals to 11 plus n minus 1 into -3. so therefore -150 is equals to 11 प्लस, सो यहाँ पे -3n माइनस माइनस प्लस
3. So therefore minus 150 is equals to 11 minus 3n plus 3. So therefore this is minus 150 is equals to 11 plus 3 हो जाएगा 14 minus 3n. Therefore minus 150 minus 14 is equals to minus 3n. So यहाँ पे एडिशन आएगा minus 164 is equals to minus 3n. Minus minus gets cancelled. So this is 164 is equals to 3n. As you know the divisibility rule of 3. अगर कोई भी नंबर का एडिशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. सो लेट जस्ट चेक कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है. 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सो देयरफॉर दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सो हमको तो यहाँ पे एन कैसा चाहिए था, पॉजिटिव, नेगेटिव और सॉरी एन टर्म्स है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए. ओके जो हम बात कर रहे थे वो डिफरेंस की थी, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. पर हम यहाँ पे टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, बट टर्म्स कैन बी दिस. सो यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज़ 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर AP. देयरफॉर यू हैव टू राइट दैट 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ given AP. Okay, now let's just move on to example number 7, which is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Okay, so let's just start. हमको A31 फाइंड करना है. सो A31 इज क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज गिवन, A11 इज गिवन 38 एंड A16 इज गिवन 73. सो A11 को हम जनरल फॉर्मूला से लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस 11 minus 1 into D, that is A plus 10D. And this is 16, so which is A plus 16 minus 1 into D, which is equals to A plus 15D. So we have two formulas here, that is A plus 10D is equals to 38, which is the equation number 1, and the second is A plus 15D is equals to 73, which is the second equation. Now subtract this. Okay, so let's just write A plus 15D is equals to 73 and A plus 10D is equals to 38. So this is minus minus minus, ये हो जाएगा कट. This is 5D is equals to, this is 13 and this is 6. 6 minus 3 is minus 3 and this is, sorry, this is plus 3 and 13 minus 8, that is 5. Therefore the difference D is given as 7. So हम ये difference D को हम किसी भी एक equation में रख के देखेंगे. So now from equation 1 we have A plus 10 into 7 is equals to 38. Okay, so A plus 70 is equals to 38. Therefore, A is equals to 38 minus 70. What is A? Obviously, it is a negative term, that is 10 minus 8, that is 2, and 6 minus 3, that is 32. Minus 32 is the first term. Okay, now let's just use the nth general formula to find the 31st term, that is A31 is equals to A plus 31 minus 1 into D. So what is A? Minus 32 plus 30 into 7. So minus 32 plus 7 3s are 21. So this is your answer, that is the 31st term. So you have to give me this exact answer in the comment section. So that's all for today. In the next section we will continue the exercise 5.2. Till then, keep watching
Like, share and subscribe the channel. Thank you.